With me, Poonam Burde. There's lots lined up for you on this edition, but let's get you started with some breaking news that's now coming in from Tamil Nadu, where we're given to understand that petrol bombs were hurled outside the Raj Bhavan. This is a claim that was made by the Tamil Nadu BJP chief, who's come out and said that petrol bombs have been hurled outside the Raj Bhavan by allegedly the same person who was also behind the attack on the BJP headquarters in Chennai last year. What we are learning now is that one person has been arrested in this connection. Whether there is a link to the 2022 attack as the BJP claims, that is still under investigation and there is no confirmation on that. But the Tamil Nadu BJP chief going on to say that he is the same person who was responsible for the attack on the BJP headquarters in Chennai in 2022, and because of the inaction of the state government, we're seeing such attempts being made by people. It's the inaction that emboldens such attacks is the claim and the charge that's coming to the fore from the BJP. Mugilan, my colleague, now joining us, getting us more details. Mugilan, first, if you could tell us what exactly transpired, what happened and where the investigation is. This is one person called Vinod. He has hurled the petrol bomb outside the Raj Bhavan, and immediately the police personnel who were deployed for bandobast outside Raj Bhavan have apprehended him, and during investigation it has been found that it is the same person who hurled the petrol bomb at BJP office in 2022, and he has also given a confession now stating that he was in prison for last 1 year, and it is the governor who didn't give consent for his release is what he has stated in his submission before the police now, and the further inquiry regarding the matter is underway, and what we are hearing from the Tamil Nadu police is that he is an history sheeter. He has 4 cases of hurling petrol bomb at different places since 2015. He have involved in hurling petrol bombs in 4 places, and one among that place is BJP office, and he has hurled this petrol bomb outside the Raj Bhavan, stating that the governor didn't give his consent and to free him from the prison for which he was in prison for last 1 year. Right, so far we have had the BJP come out and accuse the DMK of diverting issues and not really taking a look at the law and order situation in the state, which is why such things happen, is what Annamalai of the BJP, the state president, came out and said. But have we had any reaction so far from the governor's office as to what's transpired? The governor's office have not reacted to the incident, but as soon as the incident happened, that is as soon as this particular accused Vinod hurled the petrol bomb outside the Raj Bhavan, he was immediately apprehended by the police, and he has been taken to the Guindy police station, where he is being inquired by the top police officials, and he has also given a confession on why he has hurled the petrol bomb outside Raj Bhavan. So the further investigation will reveal whether is there any alternative motive for this incident, or whether he was planning something big. Those details will come out only after further investigation, but as of now he has stated that he hurled the petrol bomb at the Raj Bhavan only because governor didn't give his consent for his release, and he is in prison for last 1 year. Right, he was in prison for the last 1 year, and yet the minute he comes out, or a few days after that he comes out, we see another attack like this coming to the fore. Questions are going to be raised, like the BJP is already doing, as far as the law and order situation and the state government is concerned. Before now, we are shifting focus to some other news that's coming in, and this is from Uttar Pradesh, where the crackdown on madrasas, unrecognized ones, is continuing by the state government. Now a deadline has been set for at least 4,000 madrasas. They are unrecognized, and they will have to pay a fine of 10,000 rupees per day, or they will have to shut down, is the diktat that's now come to the fore from the Yogi Adityanath government. A 3-day deadline has been set by the state government for these madrasas to furnish the details that the state government is seeking. All relevant documents will have to be provided to the state government. It is in contravention of the law, the right to education, which is why this crackdown is being done by the state government. But even as we see that the investigation continue, politics is only peaking. We've seen several within the community, several critics come out and question, call it a conspiracy of this not being a crackdown, but it really being a conspiracy against the community. We've had several within the opposition in Uttar Pradesh also come out and allege similar things. Let's take a look at some of those reactions.
चुनाव नजदीक है, अब मदरसों की जांच भी होगी, विदेशी फंडिंग को भी चेक किया जाएगा, जुर्माना भी लगाया जाएगा, मुकदमे भी लिखे जाएंगे। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लफ्ज जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मदारे, यूसीसी, इन सब मुद्दों पे बात होगी। अगर बात नहीं होगी तो बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर पे नहीं होगी, महिला सुरक्षा पे नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी के पुराने मैनिफेस्टो पे बात नहीं होगी। लेकिन जनता वो बेरोजगारी और महंगाई पे सवाल पूछ रही है। मैं अपने आगरा के डीएम साहब महोदय से कहना चाहूँगा कि ऊपर से जब आदेश है कि गैर मदरसे जितने भी चल रहे हैं आगरा में कई है, इसकी सूचना भी दी है और इनकी कई हमने बताई भी है कि ये मदरसों का कोई भी लेना नहीं है, फिर भी ऐसे मदरसे आगरे में चल रहे हैं। प्रशासन से हम मांग करते हैं ऐसे मदरसों को अगर एक हफ्ते के अंदर बंद नहीं करते हैं तो राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत रोड पे बैठ के आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी खुद जिला अधिकारी महोदय की होगी, क्योंकि कई राज्यों में कई जिलों में बंद हो चुके हैं, लेकिन आगरा में अभी एक भी मदरसा हमारे डीएम साहब ने नहीं बंद कराया है। ऐसा क्या हो रहा है? ऐसे इनको क्या डर है कि मदरसे बंद कराने से कोई माहौल खराब हो जाएगा? फंडिंग को लेकर भी बात की जाती है, क्या लगता है आपको कहाँ पे इन मदरसों में फंडिंग आती है? ये सब आतंकवादियों से फंडिंग आती है इन मदरसों को। इनको जो इराक, ईरान, पाकिस्तान, इनसे इनका वो होता है, इनको जल्दी से जल्दी नहीं बंद कराएंगे तो राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत और उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी खुद आगरा प्रशासन की होगी। शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश ने कई जिलों में मदरसों को नोटिस जारी किया है और उसमें नोटिस में कहा है कि अगर आप पास मानता नहीं है और चलाया, मदरसे को चालू रखा तो 10,000 रुपया जुर्माना लगा दिया जाएगा, और वो भी प्रतिदिन। ये सीधे सीधे तौर पर मदरसे को बंद करने का एक प्लान है। पहले सर्वे के नाम पर, उसके बाद टेरर फंडिंग के नाम पर डराया धमकाया गया, और अब सीधे सीधे तौर पर नोटिस भेज करके मदरसे के मोहतमिम और मौलाना लोगों को धमकी दी जा रही है। You've heard the reactions coming to the fore, but let's put this in perspective before we get our reporter on ground to get us more details. Here's what the Yogi Adityanath government is doing. There are several madrasas in the state of Uttar Pradesh, but not all of them are under the scanner. The number of madrasas that are in the state amount up to 24,000, but many of them have been complying with the norms of the state government. The recognized ones are 16,000 out of those 24,000. So there is absolutely no lens on those 16,000. But 8,441 madrasas are unrecognized, and those madrasas will now have to provide all relevant documents and details to the state government, and other than that, they are going to be having to shut their doors. What these unrecognized madrasas are also being looked into is the funding. Many of them, at least 4,000 of them, are under the scanner because their source of funding is what there is a question mark on, and that is under investigation. Remember, just 2 days ago, we here on CNN News 18 told you about a probe that has now been initiated by the state government, an SIT that has been formed to investigate exactly that. Why is the UP government doing this then? There are several reasons of why they've asked these unrecognized madrasas to provide those details, and a 3-day deadline has been set for them. Reason number one is that the fact that these madrasas are operating without a registration is in contravention to the right of education. It's in contravention to the rules, which is why they will have to comply. Reason number two is that there is a lack of legitimate records of as far as their funding goes, which is also why those documents are now being sought. When these investigations were taking place, the UP government is believed, the local administration is believed to have said that there was a reluctance among many of these madrasas in sharing that information, especially as far as their source of funding went, which is why now they've decided to find them. The relevant documents were not submitted to the government in a time-bound manner, which is why a 72-hour deadline has now been set by the state government. If these madrasas fail to provide that information, those documents, they will have to either pay a fine of 10,000 rupees per day, or they will have to shut their doors. That's the clear diktat that has come to the fore from the Yogi Adityanath government. Amit, my colleague, now joining us, getting us more details of what exactly has transpired. Amit, 3 दिन की डेडलाइन दी गई है इन मदरसों को। SIT तो जारी की गई थी, उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, लेकिन अगले 3 दिनों में अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए, ये जो अनरिकग्नाइज्ड मदरसा हैं, उनको अपने दरवाजे बंद करने पड़ेंगे।
जी हाँ, बिल्कुल। अगर 3 से 5 दिनों के अंदर वो अपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे पाएंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, तो जाहिर तौर पे उनको अपना मदरसा बंद करना पड़ेगा। और ऐसी सूरत में अगर वो मदरसा अपना बंद नहीं करते हैं तो उनको रोजाना 10,000 रुपया उनके ऊपर पेनल्टी लगेगा, उनको फाइन लगेगा और उनको फाइन ये भरना पड़ेगा। इसलिए इस लिहाज से, क्योंकि 3 से 5 दिन के अंदर अगर वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे पाते हैं तो फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो माइनॉरिटी अफेयर्स का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जाकर फिर से घूमेगा एरिया में और देखेगा कि वो मदरसा खुला है या बंद है। अगर खुला पाया जाता है तो उस पर 10,000 रुपए का पेनल्टी रोज के हिसाब से लगा सकता है। तो देखना होगा कि ये शुरुआत कहां से हुई। दरअसल इससे पहले जब सर्वे कराया गया था तो तब उस वक्त भी काफी ज्यादा राजनीति हुई थी। विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, उन्होंने सरकार पर हमला बोला था। लेकिन जब सर्वे पूरा हुआ तो 25,000 के आसपास ऐसे मदरसे थे जो लगातार उत्तर प्रदेश में चल रहे थे और वो उनकी मान्यता थी, वो रजिस्टर्ड मदरसे थे। 25,000 में से 16,500 रजिस्टर्ड थे, उसका 8,000 से ज़्यादा ऐसे मदरसे थे जो जिनकी मान्यता बिल्कुल नहीं थी। और इनमें से भी 8,000 में से जो इंडो नेपाल बॉर्डर पे जो मदरसा थे, खासतौर से अगर बात करें बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, ये तमाम जगहों पे जो मदरसा चल रहा है, उनकी फंडिंग को लेकर सवाल उठाया गया। तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फंडिंग हुई थी, उसमें उतने बच्चे नहीं पढ़ते थे जिनके बच्चों के लिए उतने खर्च होते थे। तो आखिरकार वो पैसा आता कहाँ से था, अब वो बता नहीं पाए थे। अब उसी को लेकर SIT की जाँच की जा रही है, और जिसमें ATS चीफ खुद मोहित अग्रवाल जिस SIT को हेड कर रहे हैं। तो अब एक मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में तो जाहिर तौर पे ये जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि अवैध मदरसों को शटडाउन करना पड़ेगा, बिल्कुल उसको बंद करना पड़ेगा 3 दिन के अंदर। नहीं तो अगर उनके पास डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट लाकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे। तो अब देखना होगा कि 3 दिन में अगर ये अवैध मदरसे बंद नहीं होते हैं तो फिर क्या उन पर 10,000 रुपया रोजाना जुर्माना लगता है या फिर और भी कुछ कार्रवाई उन पर की जाती है। जी 3 दिन की डेडलाइन दी गई है, उसके बाद क्या कार्रवाई होगी ये तो देखना होगा। लेकिन ये जो SIT का जो गठन किया गया है, अमित, क्या उनके लिए कोई डेडलाइन है कि कब तक उनको ये जांच पूरी करनी होगी, जिसके बाद शायद जो एक्शन लिया जाएगा उस पर निर्णय होगा? देखिए, SIT को लेकर कोई डेडलाइन नहीं है, क्योंकि ये विदेशी फंडिंग का मामला है, पूरे फंडिंग से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर तौर पे इसका जो जांच होगा, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी, वो काफ़ी बड़े पैमाने पर इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं है। और जब ATS चीफ मोहित अग्रवाल खुद इसकी कमान संभाले हैं तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बारे में भी जाँच की जाएगी कि क्या कोई टेररिज्म एंगल है क्या। क्योंकि इंडो नेपाल बॉर्डर पर ये सभी मदरसा हैं, खासतौर से बहराइच, श्रावस्ती जिला, महाराजगंज जिला, और ये 4,000 के आसपास ये मदरसे हैं। तो जाहिर तौर पे इनके इन्वेस्टिगेशन पे समय लगेगा और इनके लिए कोई डेडलाइन नहीं है। और जिन मदरसों को जाहिर तौर पे जिन पर सवाल उठ रहा है फंडिंग को लेकर, उन्हें भी नोटिस इसी तरीके से आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि सर्व होगा। जी अमित, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए. Do keep a track of the political reactions that are coming in, because this is a controversy that refuses to die down. For now though, we are shifting focus to the other big story that we're tracking here on CNN News 18, and that's day 19 of the Israel-Hamas war. The offensive there continues. A ground offensive partially has begun, says Israel. We are seeing the fireworks echo across the world. In fact, at the UNSC, we had a showdown between the General Secretary of the United Nations and Israel. We came out to hear some statements from Antonio Guterres, the General Secretary of the United Nations, who went on to say that the Hamas attacks cannot be viewed in a vacuum. That was a comment that triggered a political showdown, with Israel then asking for the UN General Secretary to step down. Listening to what transpired at the UNSC summit. I'm deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza. Let me be clear, no party to an armed conflict is above international humanitarian law. The grievances of the Palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas, and those appalling attacks cannot justify the collective punishment of the Palestinian people. The UN is failing, and you, Mr. Secretary General, have lost all morality and impartiality. Because when you say those terrible words that these heinous attacks did not happen in a vacuum, you are tolerating terrorism. And by tolerating terrorism, you are justifying terrorism. And the SG is blaming the victim. You are blaming Israel. This is a pure blood libel. This is a pure blood libel. And I think
that the Secretary General must resign. Because from now on, every day that he is here in this building, unless he apologizes immediately, today we called him to apologize, there's no justification to the existence of this building. Saturday, October 7, is a wake-up call for the entire free world, a wake-up call against extremism and terror. On that day, over 1,500 terrorists of Hamas and Islamic Jihad infiltrated Israel from the south with a viciousness exceeded even ISIS, killing over 1,400 babies, children, women, and men, and wounded over 4,000. They went from house to house, slaughtering entire families and individuals in the beds, on the streets, on the way to the synagogue, raping women, burned them alive, dancing and chanting on people's bodies. You have not been there. You have not seen the horror or smell it. This massacre will go down in history as more brutal than ISIS. Hamas are new Nazis. Hamas is the new ISIS is what Israel has been saying ever since we saw the first terror attack on the 7th of October. That sentiment has been echoed across the globe. The United States, in fact, and Secretary of State Antony Blinken at that UNSC meeting, in fact, then drew parallels to several other terror organizations, not just ISIS. He said, be it Hamas, be it ISIS, be it Boko Haram or the Lashkar-e-Taiba, be it a terror attack that happened in New York when he was referring to 9/11 or in Mumbai, the 26/11 attacks. All of these terror attacks are unlawful, they are unjustifiable, and the response for them should be one and the same. No member state should arm or fund organizations like Hamas, was the United States' clear stand. Listen in. As this Council and the UN General Assembly have repeatedly affirmed, all acts of terrorism are unlawful and unjustifiable. They're unlawful and unjustifiable whether they target people in Nairobi or Bali, in Luxor, Istanbul or Mumbai, in New York or Kibbutz Berry. They're unlawful and unjustifiable whether they're carried out by ISIS, by Boko Haram, by Al-Shabaab, by Lashkar-e-Taiba, or by Hamas. They're unlawful and unjustifiable whether victims are targeted for their faith, their ethnicity, their nationality, or any other reason. And this Council has a responsibility to denounce member states that arm, that fund, and train Hamas, or any other terrorist group that carries out such horrific acts. India is deeply concerned at the deteriorating security situation and large-scale loss of civilian lives in the ongoing conflict. The mounting humanitarian crisis is equally alarming. The escalation of hostilities in the region has only exacerbated the dire humanitarian situation and has once again underscored the fragile nature of the ceasefire. The 7th October terror attacks in Israel were shocking, and we condemn them unequivocally. Our Prime Minister was one of the first global leaders to have conveyed his condolences for the loss of lives and prayers for the innocent victims and their families. We stood in solidarity with Israel at their moment of crisis when they were facing these terror attacks. Hamas is a terror organization. What happened on the October 7th is a terror act, and there are no two ways about it. That's the message that came to the fore from Israel from day one, from US and its Western allies. The brutality that Hamas and the terror organization has been unleashing for the last 18 days has been caught on tape. Listen in to this chilling audio tape that has now come out, in which you actually hear Hamas terrorists boasting about killing Jews. Hello. Hello. Hi, Abba.
طب انا قاعد اكلمك من جوا بسيم، افتح الواتس تبعه قول له وين، شوف كيف القتلى، اكلمك من جوال يهوديه قتلتها وقتلت جوزها، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر ولله الحمد. يابا افتح الواتس شوف كيف قتلت يابا، افتح بتدفع عليك واتس قول له وين بروح، ربنا يوفقك بالسلامه يابا اجوا بسيم يابا والله 10 قتلت 10 بيدي يابا على ايدي اعطيني امي يما يحميك يما طول الليل 10 بيدي يما 10 يما بيدي قتلت طول الليل ادعي لك يما طول الليل ادعي لك ربنا يرحمك بالسلامه يما ربنا يرحمك يما نعمل لك ضبط مباشر من جوا ادعي لك يما طول الليل ادعي معاك يما ربنا يحميك يما اقتلهم ربنا يحميك يما خذ يما ربنا يحميك محمود يابا محمود انت وين؟ انا جوا مفلسين عليها جوا قتلت 10 عليها 10 بيدي قاعد اكلمك من جوال يهوديه قتلت 10 والله وانت بذكير انا بذكير مو بذكير والله صرت تكاري انا اول فكره بدات بفضل الله عز وجل انا اقول لك ارفع راسك يابا فوق ارفع راسك يابا انت في نص سكاري جوا انت جوا على المدينه في النص سكاري جوا شفت على الواتس شوف كيف الخط قتلكم على الفون شفت على الواتس تبعي خلاص ارجعوا ايش ارجعوا مش رجعوا اما نصر لك شهاده امي ولدتني عشان هذا الدين على مالك على وين ارجع محمود ادعينا محمود ادعينا طب افتح الواتس تبع شوف كيف القتل شوف افتح افتح الواتس تبع دخيلك يا محمود زينا ربنا يوفقك ربنا يثبتك يا رب ربنا يثبتك يا رب الواتس تبعي تبعك الواتس الواتس جوالي على تبعك جوالي انا محمود وين افتح الواتس افتحي افتح جوالك افتح جوالي على الواتس افتح شوف القتل قتلتم بيدي طيب امانه ترجع بالله عليك ترجع الضغط افتح جوالي برجبوله ولا لمس يلا عنكم By the time representatives are done delivering their speeches today, 150 Palestinians will have been killed, including 60 children. In the last 2 weeks, over 5,700 Palestinians have been killed, including over 2,300 children and 1,300 women. Compared to the population of Gaza, that is the equivalent of 145,000 British citizens or 700,000 US citizens. Almost all those killed by Israel are civilians. Over 1 million displaced, 170,000 housing units destroyed. Excellencies, more injustice and more killing will not make Israel safer. No amount of weapons, no alliance will bring to it security. Only peace will. Peace with Palestine and its people. Our freedom is the condition of shared peace and security. It must be clear that this can only be achieved by putting an immediate end to the Israeli war launched against the Palestinian people in the Gaza Strip. Separate and distinct from the hostage situation and what we're doing to try to get them out. I want to be careful that I'm not talking about the specifics of the conversations that are going into getting these people out, lest I say something that makes it harder to do it in the future. Put that aside for a second. We have said, continue to say, that fuel is an important commodity for life and sustainment in Gaza for the Palestinian people that are still there. And we know that fuel is a precious commodity that's running out, and you need it for generators in hospitals. You need it to run the desalination pumps so that you can drink fresh water and not seawater. All of that is important. And so we're going to continue to work with partners in the region. We're going to continue to push for fuel to get in. Now, look, that said, I said this again yesterday, we certainly understand Israeli concerns about the possibility
for Hamas to abscond with fuel and use it for their own purposes and not allow it to be used in hospitals and desalination plants. We understand that. That is a legitimate concern, no question about it, which is why, again, Ambassador Satterfield is on the ground working this so hard. There's a balance here that has to be achieved. Over 200 people were taken hostage by Hamas, not just on the day of the attack, the first one, that is the 7th of October, but in the intervening days after that as well. Several of those hostages have been released, but unfortunately, the number is nowhere close to the amount of people that have actually been taken hostages. It is up to Hamas to release every single one of them, has been the message that has come to the fore from the world. But unfortunately, the families are still awaiting news, many of them not knowing what the future lies for them. Take a look at some of those families and them recounting their horror. Moments two elderly hostages, now free from the grip of Hamas, thought might never come. One of the released hostages says she was kidnapped on a motorbike and taken to Gaza. The 85-year-old is likening her time with the group to going through hell. She's really the first person that have been with other people there, and I think she's very aware that she can pass on information. Their medical condition is okay. They're talking. At first, we immediately brought them to their family members. It was a very, very emotional meeting. Meanwhile, in Gaza, people frantically search for survivors in buildings that have been bombed to ruins. The Palestinian Ministry of Health reporting more than 700 people have been killed in a bloody 24-hour period. And without much needed fuel being withheld in humanitarian aid deliveries, Gaza's hospitals are facing the possibility of mass casualty situations. Without electricity, this hospital will just be a mass grave. As attacks escalate, the Israeli military says it's now waiting for a green light on a ground invasion. Hamas is responsible for civilian casualties, but we will do every effort to avoid them and to fight this war as speedily and as rapidly as we can, but it could be a long war. To any state or non-state actor that is considering opening another front in this conflict against Israel, or who may target Israel's partners, including the United States, don't throw fuel on the fire. Well, that is time for a quick break here on this edition of Nation at 5, but lots lined up for you on the other side. Don't go anywhere. It's a bomb shelter essentially, and ये बॉम्ब शेल्टर है, इमरजेंसी वार्ड है, लेकिन बॉम्ब शेल्टर की तरह भी इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ अगर बॉम्बिंग भी हो, जिस तरह के रॉकेट हमास छोड़ता है दक्षिणी इलाके में या हिजबुल्ला छोड़ता है उत्तरी इलाके में, लेबनान इजराइल की बॉर्डर पे हैं, यहाँ कुछ भी हमला होता है तो असर नहीं होगा। यहाँ ये these glasses are bomb. Well, you can see that's outside the door, but the ceiling that is over the area where the ambulances come in, please show me, is also built to a higher fortified dimension. देखिए ये भी fortified है, It provides protection. ये भी जब एम्बुलेंस से मरीजों को लाया जाता है तो ये भी फोर्टिफाइड है, यानी इतना मजबूत है कि बॉम्ब और रॉकेट का असर नहीं होगा। इस तरीके से बनाया गया, तो यहाँ भी लोग छुपेंगे। और ये ग्लासेस जो हैं ये बुलेट प्रूफ हैं, स्प्लिंटर प्रूफ हैं। हम आपको incoming patients and healthcare workers are provided protection as they. तो सबको प्रोटेक्शन मिलेगा, जो चाहे इंजर्ड हो, जो सोल्जर आए, जो आम नागरिक आए या आम लोग हो, यहाँ के स्टाफ हो, अगर यहाँ वो हैं तो जो इलाज की पूरी कार्रवाई होती है उस पर कोई असर नहीं होगा। और हम सबसे इजराइल और किसी देश के बॉर्डर के बीच में, इजराइल और बाकी देशों के बीच जो बॉर्डर है उसके सबसे नज़दीक के अस्पताल में है। और कह सकते हैं कि जो दूसरा वॉर फ्रंट है यानी लेबनान इजराइल बॉर्डर का, उसके सबसे नज़दीक के अस्पताल में भी हैं और वैसी जगह पे हैं जो कि बॉम्ब और रॉकेट से सुरक्षित है। यहाँ रॉकेट और मिसाइल का असर नहीं हो सकता।
इजराइल हर तरफ से विवादित बॉर्डर से घिरा हुआ है और इस वक्त हम लोग एक ऐसे बॉर्डर पे हैं जहां इस वक्त झड़प चल रही है और कभी भी बड़े युद्ध की शक्ल ले सकती है। ये देखिए गैलीली मेडिकल सेंटर है, नहारिया शहर में है। नहारिया शहर में ये बड़ा मेडिकल अस्पताल है और उसके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है। यहाँ लाने का मकसद ये है कि ये सबसे बड़ा अस्पताल है जो इजराइल के किसी भी बॉर्डर से, कई दुश्मन देश हैं इजराइल के, कई देशों से इजराइल की लड़ाई है हर बॉर्डर पे, लेकिन ये सबसे करीब का अस्पताल है। 10 किलोमीटर से कम के अंदर में ये अस्पताल है। यहाँ से लेबनान बॉर्डर दिखता है और ये इमरजेंसी वार्ड, आपको बता दे, ये इमरजेंसी वार्ड है और ये जो इलाका इमरजेंसी वार्ड में अगर बॉम्बिंग भी हो, मिसाइल भी दागे जाए तो यहाँ का जो कामकाज है वो ठप नहीं होगा। ये जो देखिए बहुत मजबूती से इन दीवारों को खास तरीके से बनाया गया और इसका मकसद ये है, ये बुलेट प्रूफ कांच है, ये बुलेट प्रूफ कांच है। ये दिखा दे, यहाँ बॉम्ब स्प्लिंटर जो रॉकेट से निकलते उनका असर नहीं होगा। किस तरह से ये बनाए गए हैं आपको अंदाजा लग सकता है। और इसी तरह से हॉस्पिटल को तैयार किया गया। 2006 में जब इजराइल और लेबनान की वॉर छिड़ी थी तब भी इस हॉस्पिटल की मजबूती इतनी थी कि यहाँ कोई असर नहीं हुआ था, जबकि एक जो हमला किया गया था हिजबुल्लाह की तरफ से वो यहाँ तक पहुँचा था अस्पताल के ऊपरी माले पे। लेकिन ये इमरजेंसी वार्ड है। युद्ध अगर बहुत आगे भी बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देख सकते बहुत मजबूती से इन जगहों को बनाया गया है। ये पूरा जो इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ बॉम्ब रॉकेट का असर नहीं होगा। आप देख सकते हैं इनकी इसकी मजबूती, गेट, ये स्टील, ये देखिए इसकी मजबूती। जिस तरह से शेल्टर होते हैं दक्षिणी इजराइल में, उस तरह के शेल्टर की तरह ये पूरा अस्पताल है। बॉम्बिंग होते रहे, कोई असर नहीं होने वाला। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अस्पताल के। व्हाट्स योर नेम मैम एंड व्हाट्स योर पोजीशन? Sharon Mann from the International Affairs Department at Galilee Medical Center. Tell me about something about this hospital. What is the characteristics? It is the closest hospital near the border. Yes, this is the closest hospital to any border of Israel. It's we're 6 miles from the Lebanese border, the northern border, and we serve a very diverse community of More than 6 lakhs. Yeah, we serve a community of about 660,000 people. What is here you told me that even bomb can't disrupt the structure. Our emergency department is fortified and protected. This is very protected. Yes, so it can be completely closed. This is like a shelter. It is exactly a shelter. It is exactly a shelter. So the idea is to provide a structure that we can provide care, hopefully all the time in times of peace, but and the time of war, because your country is in the time of war. Yes, but also in the time of war. We want Can you tell me something about the structure? कुछ बता सकती हैं? Can you It's built. You can see the very thick walls. It could be completely. बहुत मोटी दीवारें हैं, देखिएगा। और कुछ है? It's fortified. It's protected. It's essentially a bomb shelter. From top also? It's a bomb shelter essentially, and ये बॉम्ब शेल्टर है, इमरजेंसी वार्ड है, लेकिन बॉम्ब शेल्टर की तरह भी इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ अगर बॉम्बिंग भी हो, जिस तरह के रॉकेट हमास छोड़ता है दक्षिणी इलाके में या हिजबुल्लाह छोड़ता है उत्तरी इलाके में, लेबनान इजराइल की बॉर्डर पे हैं, यहाँ कुछ भी हमला होता है तो असर नहीं होगा। यहाँ ये these glasses are bomb. Well, you can see that's outside the door, but the ceiling that is over the area where the ambulances come in, please show me, is also built to a higher fortified dimension. देखिए ये भी fortified है। It provides protection. ये भी जब
Welcome back. You're watching Nation at 5 with me, Poonam Burde. There's some breaking news that's now coming in, and this is in connection with the One Nation, One Poll Commission that has been formed under the chairmanship of former President Ramnath Kovind. They held a meeting just a short while ago. That meeting has just about concluded, is what we're learning. Union Home Minister Amit Shah was one of those people that was present during that particular meeting. He's just left a few minutes ago. Sources also now telling us that the Law Commission has given a presentation to this commission of the feasibility of holding simultaneous elections in the country. Arun Dhanta, my colleague, joining us live from outside the meeting venue. Arun, what more details can you share with us? What transpired in the meeting? Well, see, this was the second meeting of the panel for One Nation, One Election, which is being led by former President Ramnath Kovind, and the meeting has gotten over 15 minutes back, and the meeting lasted for almost one and a half hour, and the sources in the Law Commission are telling us that a detailed presentation was given by Rituraj Awasthi, who's the chairperson of the Law Commission, before the members of the panel, and it was a detailed presentation on the possibilities of the implementation of One Nation, One Election. What are the legal and constitutional hurdles before the government before they plan to implement it. So his presentation included everything, what amendments could be needed to make in the Constitution or in the Representation of People's Act. What are the things which needs to be changed to implement it smoothly, and what are the other issues. So it was a large-scale presentation which the chairperson had given before the panel. Of course, in the last meeting we had seen that the panel had asked for the suggestions from all the stakeholders, which of course includes the political parties and other, of course, law ministry in this regard. And in the last meeting it was, of course, decided that the Law Commission will give a detailed briefing about the feasibility and the possibility of this, and therefore in today's meeting, which lasted for almost 1 hour and 30 minutes, this presentation was given. It was discussed. Of course, there were a few doubts in the minds of the members of the panel. They asked those questions that if that this will be implemented, then what could be the changes in the Constitution and how that will be possible, and those, of course, was answered by Rituraj Awasthi, the chairperson of Law Commission. Right, so this is just the second meeting. Presentations will be done by all stakeholders. Political parties have also been asked to give in their suggestions to this commission, if whether or not it is feasible to hold simultaneous Lok Sabha elections and state elections, and what that would look like. For the moment, Arun, though, thank you so much for getting us the details. It is election season and 5 states are going to polls next month. Rajasthan is one of them. CNN News 18 is your one-stop destination as far as elections go, and the biggest newsmakers have been choosing this platform to put out the narrative that they want the voter to see. CNN News 18's political editor Aman Sharma spoke with Chief Minister of Rajasthan Ashok Gehlot on campaign trail. Several issues were addressed, including the rift with Sachin Pilot. Listen in to that exclusive conversation. सीएम फेस कौन है पार्टी का राजस्थान में? आप सीएम हैं, पर पार्टी ये नहीं बोल रही है कि सीएम कौन होगा। फिर वही कहीं सचिन पायलट, अशोक गहलोत की लड़ाई वाली बात दोबारा आ जाए जब इलेक्शन के नतीजे आए। देखिए, जरूरत नहीं बोलने की। हमारी पार्टी की बहुत बड़ी खासियत ये है, एक बार जब जो है फैसला हो जाता है हाईकमांड का, चाहे किसी के पक्ष में हो, उसके बाद में कोई उसको चैलेंज नहीं करता। ये हमारी पार्टी खासियत रही है। आगे कोई चैलेंज नहीं करेगा। जिसके लिए फैसला करेंगे सबको मंजूर होगा। क्योंकि अभी आपने कहा कि आप तो शायद कुर्सी छोड़ दें, पर कुर्सी आपको नहीं छोड़ना चाह रही है, तो उस स्टेटमेंट के मुद्दे कि आप दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं अगर पार्टी जीते। देखिए, पॉलिटिक्स कहती है कि मैं अभी कैसे कह सकता हूँ कि आगे कौन क्या बनेगा या मैं नहीं बनूंगा। पार्टी इंटरेस्ट के अंदर मैंने कहा, वो इसलिए कहा मैंने उस वक्त में, जिससे कि और लोगों को लगे कि भाई हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि परमानेंट ही बने रहेंगे। मैंने जानबूझ के कहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता, नहीं बनूंगा, क्योंकि पार्टी जीतेगी मान तभी तो बन पाएंगे ना। और पार्टी जीतेगी तब जब मालूम पड़े भाई कहाँ हमें किसको वोट देना है, किसके लिए वोट देना है। तो वो जो स्पेस है, वो स्पेस मैं थोड़ी खत्म कर सकता पार्टी के लिए। अगर मैंने काम किया है और लोग क्या
सीएम ने अच्छा काम किया है, उतने वोट दे रहे हम लोग, वो इस पर मैं खत्म क्यों करूंगा? मैं कहूंगा कि अगर ये स्थिति बनती है, मैंने कहा मुख्यमंत्री पद मुझे नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ रहा है और लगता नहीं छोड़ेगा, तो सारे संडे मैंने काम लिए वो सोच समझ के लिए। सचिन पायलट से एक बार बहुत ज्यादा आपकी पहले बहुत ज्यादा ऐसे निकम्मा गद्दार कई चीजें कही गई, आपको लगता है वो बातें अब पुरानी हैं, अब आप कोई गिले शिकवे नहीं रहे सचिन पायलट के साथ? नहीं, जो शब्द आपने काम लिए वैसे शब्द कभी काम नहीं लिए उनके लिए। वो नौजवान साथी हमारा है, केंद्रीय मंत्री बनवाने में मेरी भूमिका थी, उनको मैंने सिफारिश की थी। जब मैं सीएम बन गया था तब मैंने उनकी सिफारिश की थी केंद्रीय मंत्री बनाने के लिए। वो खुद मुझे उस वक्त में मेरे से बातचीत हुई, उनको मालूम है कि मैंने उनकी सिफारिश की थी, उनको मालूम है इस बात का, एहसास है। तो जब मैं अगर केंद्रीय मंत्री बनाने के लिए सिफारिश कर सकता हूँ तो उसको मैं कैसे मानूं कि भाई मेरा कोई स्नेह नहीं उसके प्रति है। उनके पिताजी हमारे साथ थे, पायलट, हम साथ साथ पार्लियामेंट में घुसे हैं, और जब मैं एमपी बना उनके पिताजी के साथ में, तो तब से ही बच्चे थे, तब से हम जानते हैं। डिफरेंसेस हो गए कोई कारण से मान लीजिए तो भूलो और माफ करो। आज देश के अंदर संकट की घड़ियां हैं, मेरा मानना है, डेमोक्रेसी खतरे के अंदर है, और हम वफादार पार्टी के लिए हैं, तो मेरा मानना है कि सारी बातें भूल करके कैसे हम कांग्रेस के झंडा बुलंद करें, खड़गे साहब के, सोनिया जी के, राहुल गांधी के नेतृत्व में, ये थीम लेकर हम चलना चाहते हैं लाइफ के अंदर। From one state to another, from one incumbent chief minister to another, the common theme is that both of them are confident this election is theirs to win. CNN News 18 spoke not just to the chief minister of Rajasthan, we spoke to the chief minister of Madhya Pradesh as well. Shivraj Singh Chauhan extremely confident. He is not down and out. He is ready to fight. This is the BJP's election to win. Listen to what he had to tell us. सबसे पहली बात यह है लाडली बहन योजना, इसके बारे में बहुत चर्चा में है, चुनाव का बीच में यह है, क्या आपको लगता है कि महिलाएं ही आपका नैया पार कराएंगी इस बार? देखिए, लाडली बहना हो या लाडली लक्ष्मी हो, ये हमने कभी चुनाव को देख के नहीं बनाई। हमने जब लाडली लक्ष्मी बनाई थी तब चुनाव नहीं थे, 2006 में बनाई मैंने। मुख्यमंत्री बनने के तत्काल बाद दो योजनाएं मैंने बनाई थी, एक मुख्यमंत्री कन्या विवाह और दूसरी मैंने बनाई थी लाडली लक्ष्मी, क्योंकि बेटी को बोझ समझा जाता था और मेरे मन में एक बोझ था कि बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे। और ये भाषण से नहीं होगा, अगर बेटी आर्थिक रूप से सशक्त हो जाए, शादी में पैसे खर्च ना करना पड़े, क्योंकि कई बार शादी में दहेज देना पड़ेगा, इसलिए बेटी नहीं आए, बेटी आए। बेटी बोझ नहीं वरदान है, इस बात से हमने लाडली लक्ष्मी बनाई, कन्या विवाह योजना बनाई, और बाद में वो योजनाएं इतनी पॉपुलर हुई कि हर एक राज्य ने किसी न किसी रूप में लाडली लक्ष्मी योजना को बनाया। दो चीजें यहां हैं, महिला आरक्षण बिल, क्या आप खासतौर पर उसकी समर्थन तो करते हैं, लेकिन अब जैसे कांग्रेस कह रही है कि उसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए, क्या आप उस बात से सहमत है? दूसरा, जो कांग्रेस कह रही है कि आप बहुत फ्रीबीज अनाउंस कर रहे हैं, पैसा कहां से लाओगे, पैसा नहीं दे पाओगे? मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये आधी आबादी को पूरा न्याय दिया है। हमारी बहनें आज भी आप देखिए कितनी पार्लियामेंट में पहुंचती हैं, कितनी असेंबली में पहुंचती है। महिला कितना भी कहते रहे, कितनी बहनें पहुंच पाती, कितनों को टिकट मिलते हैं। ये तभी सुनिश्चित होगा उनका पार्टिसिपेशन जब आप उनको आरक्षण देंगे। इसलिए कदम बहुत बड़ा कदम है, इसके लिए अभिनंदन। दूसरी चीज, फ्री बीज की जो बात कर रहे हैं, देखिए मध्य प्रदेश को आप पूरा देख लीजिए। हमने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत बनाया है। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो बजट था 21,000 करोड़, आज 3,14,000 करोड़ रुपए का बजट है, 5,000 रुपए और एक्स्ट्रा आ रहा है उसमें। और कमलनाथ जी की सरकार आई थी कुछ दिनों के लिए, उन्होंने बहुत सारे आपके स्कीम को भी बंद कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले देखिए एक योजना, ये कमलनाथ जी से सवाल पूछा जाना चाहिए, मैं रोज पूछता हूं, बेगा भारिया सहरिया, ये अत्यंत पिछड़ी आदिवासी जातियां हैं, अत्यंत पिछड़ी। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अलग अलग योजना कुपोषण दूर करने के लिए बनाते हैं, रेडी टू ईट दे दो बच्चों के, तो मैंने कहा मां के हाथ में पैसा दे दो। अगर मां के हाथ में पैसा चला गया तो बाकी काम वो अपने आप कर लेगी, मां कभी पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी। तो तीनों
जो समुदाय सबसे पिछड़े थे उनकी बहनों को हमने 1,000 रुपये महीना देना शुरू किया और बाद में हमने इम्पैक्ट असेसमेंट करवाया तो घर में पोषण की हालत बच्चों की ठीक हो गई, पोषण का स्तर सुधर गया, क्योंकि मां ने पैसा इधर उधर नहीं किया, सबसे पहले बच्चे पे खर्च किया। मैंने आपका कन्या पूजन देखा था जहां पे आप हर साल करते हैं ये, लेकिन उसको एक राजनीतिक रंग दिया गया जहां पे दिग्विजय सिंह ने कहा है कि आप एक नौटंकी कर रहे हैं। आपको बुरा लगा ये सुन? मुझे मतलब अंतरात्मा पे जैसे चोट की हो किसी ने। देखिए हर चीज में राजनीति करना चाहिए क्या? कन्या विवाह भारत के हर घर, कन्या पूजन भारत के हर घर की परंपरा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे ऋषियों ने गाया कि जब बहन और बेटी का सम्मान नहीं होगा वहां भगवान भी नहीं रहेंगे, देवता भी नहीं रहेंगे, तो उनकी इज्जत करो। ये सनातन संस्कृति है हमारी, और उसी के अनुरूप मैं तो रोज बेटियों का पूजन मंच पे ही करता हूं, बिना बेटियों के पूजन के कोई काम ही शुरू नहीं करता मैं। और वो भी मैसेज है समाज को कि मुख्यमंत्री सम्मान कर रहा है, आप भी करो, इज्जत सम्मान करो, स्थान दो उनको। उसी परंपरा का मैं पालन कर रहा था। हर साल करते हैं, पहली बार नहीं करते, हर घर कर रहा है, हर मोहल्ले में हो रहे हैं। अब आप इतने घटिया स्तर पे उतरोगे कि उसको नाटक और नौटंकी बनाओगे। मतलब भारतीय सनातन संस्कृति नाटक और नौटंकी कह रहे हो आप दिग्विजय सिंह जी? आप इतने घटिया स्तर पे उतरेंगे कि बेटी की पूजन पे भी आप ऐसी टिप्पणियां करेंगे कि वो तो नाटक नौटंकी करता है। ये मानसिकता मैं बदलना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग वो हैं जो बहन और बेटियों को किस दृष्टि से देखते हैं। आप टंचमाल कहते हैं, आपके नेता आइटम कहते हैं, ये इस तरह के। अब इसी मानसिकता को तो मैं बदलना चाहता हूं। On that note, it's time for a quick break here on this edition. Back in just a few minutes. Do stay tuned. को लाया जाता है तो ये भी फोर्टिफाइड है, यानी इतना मजबूत है कि बॉम्ब और रॉकेट का असर नहीं होगा। इस तरीके से बनाया गया, तो यहां भी लोग छुपेंगे। और ये ग्लासेस जो हैं ये बुलेट प्रूफ हैं, स्प्लिंटर प्रूफ है। हम आपको incoming patients and healthcare workers are provided protection as तो they सबको प्रोटेक्शन मिलेगा, जो चाहे इंजर्ड हो, जो सोल्जर आए, जो आम नागरिक आए या आम लोग हो, यहाँ के स्टाफ हो, अगर यहाँ वो हैं तो जो इलाज की पूरी कार्रवाई होती है उस पर कोई असर नहीं होगा। और हम सबसे इजराइल और किसी देश के बॉर्डर के बीच में, इजराइल और बाकी देशों के बीच जो बॉर्डर है उसके सबसे नजदीक के अस्पताल में है। और कह सकते हैं कि जो दूसरा वॉर फ्रंट है यानी लेबनान इजराइल बॉर्डर का, उसके सबसे नजदीक के अस्पताल में भी हैं और वैसी जगह पे हैं जो कि बॉम्ब और रॉकेट से सुरक्षित है। यहाँ रॉकेट और मिसाइल का असर नहीं हो सकता। इजराइल हर तरफ से विवादित बॉर्डर से घिरा हुआ है और इस वक्त हम लोग एक ऐसे बॉर्डर पे हैं जहां इस वक्त झड़प चल रही है और कभी भी बड़े युद्ध की शक्ल ले सकती है। ये देखिए गैलीली मेडिकल सेंटर है, नहारिया शहर में है। नहारिया शहर में ये बड़ा मेडिकल अस्पताल है और उसके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है। यहाँ लाने का मकसद ये है कि ये सबसे बड़ा अस्पताल है जो इजराइल के किसी भी बॉर्डर से, कई दुश्मन देश हैं इजराइल के, कई देशों से इजराइल की लड़ाई है हर बॉर्डर पे, लेकिन ये सबसे करीब का अस्पताल है। 10 किलोमीटर से कम के अंदर में ये अस्पताल है। यहाँ से लेबनान बॉर्डर दिखता है और ये इमरजेंसी वार्ड, आपको बता दे, ये इमरजेंसी वार्ड है। और ये जो इलाका इमरजेंसी वार्ड में अगर बॉम्बिंग भी हो, मिसाइल भी दागे जाए तो यहाँ
का जो कामकाज है वो ठप नहीं होगा। ये जो देखिए बहुत मजबूती से इन दीवारों को खास तरीके से बनाया गया और इसका मकसद ये है, ये बुलेट प्रूफ कांच है, ये बुलेट प्रूफ कांच है। ये दिखा दे, यहाँ बॉम्ब स्प्लिंटर जो रॉकेट से निकलते उनका असर नहीं होगा। किस तरह से ये बनाए गए हैं आपको अंदाजा लग सकता है। और इसी तरह से हॉस्पिटल को तैयार किया गया। 2006 में जब इजराइल और लेबनान की वॉर छिड़ी थी तब भी इस हॉस्पिटल की मजबूती इतनी थी कि यहाँ कोई असर नहीं हुआ था, जबकि एक जो हमला किया गया था हिजबुल्लाह की तरफ से वो यहाँ तक पहुँचा था अस्पताल के ऊपरी माले पे। लेकिन ये इमरजेंसी वार्ड है। युद्ध अगर बहुत आगे भी बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देख सकते बहुत मजबूती से इन जगहों को बनाया गया है। ये पूरा जो इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ बॉम्ब रॉकेट का असर नहीं होगा। आप देख सकते हैं इनकी इसकी मजबूती, गेट, ये स्टील, ये देखिए इसकी मजबूती। जिस तरह से शेल्टर होते हैं दक्षिणी इजराइल में, उस तरह के शेल्टर की तरह ये पूरा अस्पताल है। बॉम्बिंग होते रहे, कोई असर नहीं होने वाला। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अस्पताल के। व्हाट्स योर नेम मैम एंड व्हाट्स योर पोजीशन? Sharon Mann from the International Affairs Department at Galilee Medical Center. Tell me about something about this hospital. What is the characteristics? It is the closest hospital near the border. Yes, this is the closest hospital to any border of Israel. It's we're 6 miles from the Lebanese border, the northern border, and we serve a very diverse community of More than 6 lakhs. Yeah, we serve a community of about 660,000 people. What is here you told me that even bomb can't destruct the structure. Our emergency department is fortified and protected. This is very protected. Yes, so it can be completely closed. This is like a shelter. It is exactly a shelter. It is exactly a shelter. So the idea is to provide a structure that we can provide care, hopefully all the time in times of peace, but and the time of war, because your country is in the time of war. Yes, but also in the time of war. We want Can you tell me something about the structure? कुछ बता सकती है? Can you tell? It's built. You can see the very thick walls. It could be completely. बहुत मोटी दीवारें हैं, देखिएगा। और कुछ है? It's fortified. It's protected. It's essentially a bomb shelter. From top also? It's a bomb shelter essentially, and ये बॉम्ब शेल्टर है, इमरजेंसी वार्ड है, लेकिन बॉम्ब शेल्टर की तरह भी इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ अगर बॉम्बिंग भी हो, जिस तरह के रॉकेट हमास छोड़ता है दक्षिणी इलाके में या हिजबुल्लाह छोड़ता है उत्तरी इलाके में, लेबनान इजराइल की बॉर्डर पे हैं, यहाँ कुछ भी हमला होता है तो असर नहीं होगा। यहाँ ये these glasses are bomb. Well, you can see that's outside the door, but the ceiling that is over the area where the ambulances come in, please show me, is also built to a higher fortified dimension. देखिए ये भी fortified है। It provides protection. ये भी जब एम्बुलेंस से मरीजों को लाया जाता है तो ये भी फोर्टिफाइड है, यानी इतना मजबूत है कि बॉम्ब और रॉकेट का असर नहीं होगा। इस तरीके से बनाया गया तो यहाँ भी लोग छुपेंगे। और ये ग्लासेस जो हैं ये बुलेट प्रूफ हैं, स्प्लिंटर प्रूफ है। हम आपको incoming patients and healthcare workers are provided protection as they. सबको प्रोटेक्शन मिलेगा, जो चाहे इंजर्ड हो, जो सोल्जर आए, जो आम नागरिक आए या आम लोग हो, यहाँ के स्टाफ हो, अगर यहाँ वो हैं तो जो इलाज की पूरी कार्रवाई होती है उस पर कोई असर नहीं होगा। और हम सबसे इजराइल और किसी देश के बॉर्डर के बीच में, इजराइल और बाकी देशों के बीच जो बॉर्डर है उसके सबसे नजदीक के अस्पताल में है। और कह सकते हैं कि जो दूसरा वॉर फ्रंट है यानी लेबनान इजराइल बॉर्डर का, उसके Welcome back. You're watching Nation at 5. The cash for query scandal is only escalating and the political fireworks around it are peaking even as the ethics panel of the parliament is conducting an investigation whether or not TMC member of parliament Mahua Moitra did in fact ask questions in parliament in lieu of favors, in lieu of cash. That was an allegation that was made by a lawyer who she claims was a jilted ex. BJP MP Nishikant Dubey then wrote a letter to the ethics committee based on which an investigation is going underway. We also had the Union IT Minister come out and confirm that they will be fully cooperating with this ethics panel's investigation. That triggered a fresh war of words between Mahua Moitra and Nishikant Dubey. Listen in to some of those reactions pouring in.
राष्ट्रीय सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है और ऐसी जानकारियां जो संसद से जुड़ी हों या फिर जिसके कारण किसी भी तरह का संकट खड़ा हो सकता हो, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू के साथ साथ भ्रष्टाचार का इशू भी है। और जैसा कि आपको पता है, जांच चल रही है। हम चाहते हैं कि उचित कार्रवाई भी हो और जांच भी जल्द पूरी हो। See, as far as this whole issue is concerned, I would reserve my comment for a later date because, as rightly pointed by you, the thing is in front of, the matter is in front of the Ethics Committee, and I should not breach that because let the Ethics Committee investigate, let the Ethics Committee come out with a report, and let us all know what the truth is, which we are all awaiting eagerly. Let me not cross the line of commenting before the Ethics Committee comments. Pallavi Ghosh now joining us live, getting us more details of this controversy. Pallavi, we've seen the social media war that has broken out really between Mahua Moitra and Nishikant Dubey. But what really is the status of this Ethics Commission's investigation? So the Ethics Committee is going to meet at noon tomorrow, and both Jay Anand as well as Nishikant Dubey, the main two complainants, are going to put forward their arguments. Nishikant Dubey, our sources are telling us, is going to focus only on what he calls the misuse of the Official Secrets Act and the violation of it, and the fact that the login details of Mahua Moitra as a parliamentarian was given not to our office staff but to a businessman living abroad, living in Dubai. And this is what we are talking about, Darshan Hiranandani. Now this is going to be a strong pitch which is going to be coming in from Nishikant Dubey, that nothing else matters, but the fact is that she gave in the login details to someone who had a conflict of interest, someone who's not based in the country, and that it was open and can be open to misuse is a very, very grave violation. So this invites not just a stringent action from Parliament, from the Speaker, which is a disqualification of her as an MP, but also criminal conspiracy cases against her, because as we all know, the matter has already been referred to Lokpal and to a CBI. Now, as far as Jay Anand is concerned, we've seen his detailed letter both to a Delhi Police Commissioner, also to a Speaker, also to a CBI, making the point that he is being threatened into silence, and how he has been arm twisted. The relationship has been misused by Mahua Moitra, and that he has hard evidence to show that indeed she misappropriated her position as a member of Parliament. The login details allegation against her is something which is also being corroborated by Jay Anand. So what will happen tomorrow is that both of them will give their testimony. There's also possibility that the NIC report may be submitted directly to the Ethics Committee, because we are being told that the investigation is complete. Now, in case the report actually corroborates the fact, Poonam, that she did give in the login details to someone sitting in Dubai, that's a very serious charge against her. It invites both legal as well as political action. At some point of time, of course, Mahua Moitra will be called in by the Ethics Committee to give her version. Till now, she hasn't denied nor accepted the login details, but she has completely accused Jay Anand of being a jilted lover, and also how these people are trying to arm twist her or threaten her into silence. The charge is of grave importance, like IT Minister Ashwini Vaishnav also pointed out. What happens tomorrow, do keep a track of that. But for the moment, Pallavi, thank you so much for getting us the latest on that. Shifting focus now to Tamil Nadu, where a controversy has erupted once again between the government and the governor. This is after Governor R.N. Ravi accused the DMK of reducing freedom fighters of the state to mere caste leaders. They are dividing on caste lines, was the allegation that R.N. Ravi made, an allegation that was rebutted with equal force by the DMK. Listen in to those reactions. When I see persons like Maruti brothers being reduced to caste leader, I wonder if Mahatma Gandhi, Netaji Subhash Chandra Bose, Sardar Patel, Shahid Bhagat Singh, if they were born here in Tamil Nadu, they too would have been reduced as caste leaders. Such is the situation here today. And a concerted attempt has been made in this state to erase the history of this place, to write a parallel history of this place.
They have created a false narrative of racial divide, Dravid and Aryan race. Welcome everyone. Thanks a lot for staying with us. You're watching Plain Speak with me, Shivani Gupta. As India celebrated Dussehra on Tuesday, Prime Minister Narendra Modi urged people to throw out forces using casteism and regionalism to divide the country. Addressing a huge gathering in the national capital, he said the festival should also mark the burning of ideologies that detract from India's development. It's a consistent message